Job realize their dreams and improve their lives. Thank you, ma'am. Nextly, we have Mr. Vinit Thakur, sir. Sir is currently working as HR manager at Harmeza Private Limited. I would like to welcome Professor Jagara sir to felicitate sir with a bouquet of flowers. I would like to invite Mr. Professor Kaga sir to felicitate. Next, I would like to introduce someone who has enlisted her efforts to make all of us around the world. She is the backbone for all of us. Yes, it's our principal ma'am. I would like to welcome Professor Vipali ma'am to felicitate principal ma'am. Thank you, ma'am. The principal is the driving force to manage, coordinate, guide, and supervise various activities at an educational institute. And we are fortunate enough to have Dr. Rasika ma'am as our principal. It's my honor to welcome Principal ma'am on the stage to address the students. So good morning to all. Good morning all students. Okay, so today whatever the event we have organized is one day session also from the industry. What actually happened in industry. So you should know all the things what going in the industry, especially in the herbal industry. And then as per the commitment, whatever we have decided that yes, my MIP student will be all rounders student, but here we are not concising that things to only MIT student, but we open these frontiers for the people who are residing in and around the area. So when we are thinking about the placement, I am not taking your much time because we have to hear the expert session, technical session as well as the HR session is how to crack the interview, what knowledge you should have or what thing you should have with you while cracking that interview. Because in the preliminary discussion with these people, when we just discussed, so at that time one thing comes that a conclusion means students are not taking these things very seriously. Students are not taking jobs, not taking education seriously, and because of that most of the students, in spite of having the education that is bachelor degree or master degree, they are not in good company, not at good position, and not having the that particular good package, because whatever the base is, we can say that with a big base, and so this case should not be happen. And for that purpose, ma'am and sir, means in a month we are planning at least 2 to 3 activity for students. So they should come up with a good knowledge. They should come up with
always I am having the habit to give one toast to student as well as to my staff regarding somewhat motivation. I am not expecting 100% of motivation that I can give to everyone, but yes, we can say that quite not 1% ignition of mind maybe there if I am speaking something. So it's always my request to my students also, and whatever the students which are coming from here and all and around this particular district, say Nasik district, Ahmednagar district, or from far also students are coming, right? So everyone has to recognize your own potential, because whatever we are having the potential, no one can judge. Means if I am interviewing you people, I am just observing you people only for 10 to 15 minutes. So that is also not the case. Maybe in 5 minutes also we can finish that interview. So in 5 minutes, how should I represent myself? Because whatever the strength, whatever the weaknesses are within me, it's with me. No one can judge you just giving 5 minutes. So you have to polish yourself in such a way that whenever there is a chance to explore yourself, at that time you can explore within 1 minute also, and you will get the opportunity to talk for 1 hour also. You can talk for that particular period of time. And now we are in the profession of this teaching, so we can arrange your session for 6 hours also. That potential I am having with me. So what is the first criteria? Identify yourself. Identify yourself and don't have the boundaries for your imagination. If your imagination power is high, at that time you can come up with very high potential, because it is not wrong if I am thinking that I want to become a Prime Minister of India. Yes, it is not wrong with this sentence, because whatever the potential you need, I am having that whatever knowledge, whatever the skill set, whatever the weaknesses, I know, and according to that, I put the statement. And at the same time, we can say that people are saying to us that this is a foolish person, what he is talking about, that he or she wants to become a Prime Minister. But yes, this big dreaming is also possible, and if you think that these particular things to be happen, at that time you have to focus on your work, you have to focus on your skill set, you have to focus on your knowledge, all the things you are just pipelining that particularly for to become a Prime Minister. This is for the example. But now we are in the field of pharma, so we can have the imagination. One day I will become the general manager of that company, XYZ company. Second imagination, you can have that, yes, I will start my own firm and will be the leading company in the future in 20 years or in 30 years, whatever it may be. So we are having many examples in front of us. If you focus on your career and on your passion, at that time nothing is impossible. So for example, you can take the example of the Sachin Tendulkar, right? At the age of 14 or 13, 14, he started playing this cricket, and at that time only he decided that I'll become the best batsman, right? And if we think about his educational background, so at that time 10th is very difficult for Sachin Tendulkar. But now you just see one lesson of his success story is included in the 10th book. And this is how we can see or we can share our success. No matter he is not past 10th also, but now the success story is included in the 10th chapter. Second thing that you have to do is be hungry or be greedy, because whenever there is hunger, at that time action start. Without hunger, if everything is okay and if everything is what we are wanting, if we are getting, then whatever that passion
to us. So be hungry. Whatever the desire, whatever the target, whatever the focus, whatever your future will, so be greedy, be hungry for that thing. That second thing you have to do. Again, third one, that never compromise. Means whatever the dream you have saw, never compromise in that dreams. Because ऐसा तो होते ही रहेगा कि स्ट्रेट लाइन में कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ अप एंड डाउन भी वहाँ पे आने वाले हैं. तो never compromise in your goals, never compromise in your dreams. And once you develop this habit, at that time, whatever the challenges, whatever the problems are in your way, so that problems and that challenges are one day are creating the path of your success, and ultimately you can reach over there, right? At the target you can reach. That means whatever the path, if I am standing in front of you here as a principal and the director of this education society, so whatever the success, it is my own path, because I have seen the success also and I have seen the failure also. This particular journey is not so simple, because to this position so many challenges, so many painful processes are there through which I have gone. Similarly, these people are sitting in front of you also has that painful process, and now they will become they become as a general manager, as a head of R&D, as a head of HRD. So everywhere means it is not a single expectation that God has created the simple straight way, and which is without we can say that challenges, or which is without painful processes. So for everyone same things is there, but on that challenge, on that problem, how is your reaction, how you can resolve that particular problems, and how you become the best version of yourself is deciding factor for becoming the successful person in life. So success is not just grab the interview and grab the opportunity. So many challenges you just see in the this upcoming future life, and just beat with that challenge and prove yourself that yes, I am the best. I now with this, I am the best. Don't be afraid of giving interview. Don't keep that fear in your mind that if I am giving the interview, what will happen to there may be the chance of selection, or there may be the chance of rejection also. But for next interview, if you are rejected here, you are having the experience that is not zero. It is 0 plus 1 fair interview. So failure is also very important in life, because success का मजा तभी आता है जब हमने फेलियर को टेस्ट किया होता है. बराबर है. तो सक्सेस अगर हमें देखना है क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फेलियर्स को भी देखना पड़ेगा. एंड लास्ट में एक सेंटेंस है जो कुछ मूवीज के डायलॉग होते हैं, तो मुझे कुछ डायलॉग बहुत अच्छे लगते हैं. कौन सा मूवी है मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन वो नहीं क्या पावरफुल पीपल, पावरफुल प्लेसेस क्रिएटिंग द पावरफुल पीपल. इट इज रॉन्ग. क्या है वो? पावरफुल पीपल आर कमिंग, वो रॉन्ग है. लेकिन पावरफुल पीपल क्रिएट्स द प्लेसेस पावरफुल, राइट? सो आप भी पावरफुल हो, आप में भी वो स्ट्रेंथ है, एंड हमें ये स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखानी है. इंटरव्यू को क्रैक करना है, अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके लिए है यहाँ पे. तो हाउ टू क्रैक दैट थिंग्स, and with this positivity, yes, I am the powerful, knowledgeable, with the skill set, with the communication, with all my 100%, I will face interview. Whatever the result, I don't care, but I will give my 100% with this. I conclude my
Talent and skills are the crops that are nurtured, grew, and given all personal opportunities to grow and grow. Further, we have a brilliant personality here to guide us with the lecture. So, it's Mr. Hardik Patel, sir. He is currently working as Head of Community Department at Farmers Harbour Private Limited. I would like to have Sir over the stage to guide us. Good afternoon, all of you. First of all, I would like to thank you for the Dr. Rasikamra and Ajit Kesar to give us the opportunity to join us and invite for the interaction of the people are for the interview and technical session. So I would like to thank you very much from the PhD. And myself is Hardik Patel and I am working as a volunteer in the Dhanore Private Limited since 23 years. And first of all, means I say something. If you need any means any of the means working in the application line, so you need to first of the self for your work. If I do inform M.Pharm student, BSc, MSc student, so you need to first of all set your goal like which field, which industry, which category, which department you would like to go for the job or any kind of job opportunity. So when I was joined the manager of the travel limited, I was new in this country. So that time I was interested in the means learning all of the instruments, all of the processes, all of the equipment, whatever used during the analysis, how to work the industry with the cross functional and different type of the supply chain, purchase, production department, communication, R&D, and everything. So day by day I learned lots of those things. I have worked in the quality control department, quality assurance department, MR department, and many of the other department I was already working in. And whatever
whatever opportunity given by the management, I never say no. Day by day, whatever opportunity give me, I have accepted and work on the same way. So, Farmer Job is started in 1997 with the 3 or 4 employees along with the management. So, we are living in other technical industry. We have different type of different type of the department in the company where quality assurance, production, spares, R&D unit, ADRC units, QA department, and everything. So the quality control is the main thing is the that the purpose of the listing, like whatever production quantity you have is produced in the organization, you need to check the quality. And quality assurance is the, you have assured the quality. There, whatever quality check by the quality department, quality control department, the process and product and whatever it is there, it is assured as per the specification or good requirement or quality. So, mainly, means quality control therefore is the incoming material, whatever it is there, you need to test all the incoming material as per the specification requirement. So you need to first whatever here is Bifam and enhanced student, they need to learn for the go through the internet or discuss with some your colleagues. Okay, what is the industry? What is the quality control department? How they run? What requirement they have? What guideline? What regulatory requirement they have followed? Which kind of product they are manufacturing, which reason they are marketed. So you need to learn each and every aspect, whatever the industry working in this area. So that means आपको जो भी आपका जो बीफार्म और एमफार्म का जो स्टूडेंट है जो लाइक टीवी में जाना चाहता है, केसी में जाना चाहता है, प्रोडक्शन में जाना चाहता है या फॉर्मुलेशन में जाना चाहता है, तो जो जिसको जो भी फील्ड में जाना है वो फील्ड का उनको नॉलेज गेन करना है बिफोर योर इंटरव्यू, नॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. You need to prepare first before your interview preparation. How the equipment they have run, the equipment principle what is there, how they working, how they run instrument, which type of analysis they do, how to identification for the your starting material, like which technology they have identification the starting material like microscopy, microscopy, SEM imaging, PLC analysis, SPLC analysis. So we need to learn all of the equipment like whatever used in the QC analysis. So majorly what जो equipment use होते हैं उसमें HPLC रहता है, GC रहता है, ICDMS रहता है, फायर रहता है, डिसोल्यूशन टेस्ट इंटीग्रेशन रहता है, कार्बोनिल मॉइस्चर एनालाइजर, वेइंग बैलेंस, FTIR, यूज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. So you need to learn this instrument to basic whatever history, basic knowledge, basic principle, how they work and which type of analysis they produce after the analysis. So this type of information जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको क्लैरिटी टेक्निकल लेवल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि पीएचपी चेक करना है उसका प्रिंसिपल क्या है, आपको वेइंग कैसे करना है उसका प्रिंसिपल क्या है, वेइंग का पर्पस क्या है, आपको कोई अगर एनालिसिस लगाना है तो क्यों करना है उसके प्रिंसिपल वो सब आपको पता होना चाहिए. कौन सी रेगुलेटरी के हिसाब से आप कर रहे हो काम, कौन सी रेगुलेटरी फॉलो कर रहे हो, कौन सा स्पेसिफिकेशन है, कौन सा प्रोसीजर है, वो सब आपको पता होना चाहिए. यूएसपी क्या है, डीपी क्या है, आईटी क्या है, तो आपको ये सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए. जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको पूछे जाएंगे कि यूएसपी क्या है, तो आपको पता नहीं रहेगा. तो ये सब फार्माकोपियल गाइडलाइन और रेफरेंसेस जो आपको डे बाय डे फॉलो करना है, वो अपडेट भी होते रहते हैं, डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपडेट होना है. तो मेजर क्वालिटी कंट्रोल जो है तो क्वालिटी चेक करता है, क्वालिटी वेरीफाई करता है, क्वालिटी
क्वालिटी अप्रूव करता है। विदाउट क्वालिटी अप्रूवल आपका प्रोडक्ट मार्केट में आपकी कंपनी के बाहर नहीं जाएगा। सो क्वालिटी कंट्रोल इज द की रोल इन द एनी इंडस्ट्री लाइक फार्मास्यूटिकल, हर्बल या वेटनरी, any kind of means industries, the quality control is the center, means heart of the industries, या whatever the companies. So आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। ऐसा है नहीं कि आप लोग वो चीज नहीं कर सकते हो। जैसा मैडम ने कहा कि आपको एक गोल सेट करना है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, और उसके लिए आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसका नॉलेज गेन करना है, उसके बाद आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो जब भी आप जाओगे आपका क्रॉस क्वेश्चन होगा, जो भी होगा आपको सब नॉलेज होगा आपके पास, तो आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो जाएगा। तो ऐसा कहीं है नहीं कि आप इंटरव्यू देने जाओगे आप नहीं कर पाओगे। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके उसमें नहीं है। जो भी चीज है आइदर सिस्टम है, एक्सपीरियंस सिस्टम है, जीसी सिस्टम है, वो भी ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं कि वो हम नहीं चला सकते। आप चाहो तो एक्सपीरियंस जीसी, आईसीपीएमएस या एलसीएमएस जैसे भी चीज चला सकते हो, और वो आपको तय करना है कि आपको कितना इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इसके लिए कि आपका एक वो होना चाहिए कि मुझे करना है। जब तक वो आपके उसमें फीलिंग्स नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो आप जो पढ़ते हो वो थियोरेटिकल बेस में पढ़ते हो, पर थियोरेटिकल आपका और इंडस्ट्री का पूरा टोटली डिफरेंट है। आप बोलोगे मेरा इंडस्ट्री में काम आएगा टेक्निकल, और आपके उसके लिए उससे भी आगे का आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। आइदर इंटरनेट पहले इतना नहीं था, अभी इंटरनेट पे भी सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट का या कोई भी मेथड, प्रोसेस कुछ भी आपको मिल सकता है। तो आपको जो चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में आपको आपको नॉलेज गेन करना है। और हमारा जो कंपनीज है वो हर्बल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट भी है, क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी होती रहती है। तो एनालिसिस, मेथड डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट, मेथड वैलिडेशन, मेथड वेरिफिकेशन, तो ये सब भी आपको डे बाय डे आपको, और उसके बाद वो गेन करना आपको पता होना चाहिए मेथड वेरिफिकेशन क्या है, मेथड वैलिडेशन क्या है, क्योंकि ये आपके पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोसेस वैलिडेशन वो सब उसका पार्ट है। तो आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 100 थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, आगे जाके आप इंडस्ट्री में जब जाओगे तो सीख जाओ, क्योंकि आपको वहाँ वही ट्रेनिंग दी जाएगी, वही लोग आपको करना। तो आपको वो चीज में आपको आगे बढ़ना है कि जो चीज आपका इंटरेस्ट है आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना क्या हो सकता है, इंडस्ट्री में कौन सा एरिया है जो मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो एरिया में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, वो एरिया में फोकस करना है, और वही एरिया के लिए इंटरव्यू जो है वो कभी फेल नहीं होगा, और फेल होगा तो अगेन ट्राई करो, हुआ तो हम नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकते उसके लिए। तो ये पूरा जो है क्वालिटी कंट्रोल का जो है, क्वालिटी एश्योरेंस का जो है, वैसा पूरा एक कंबाइंड हो किसी टीम रहता है सब कंपनी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है वो टाइम कि आपका एक बीकॉम खत्म हो जाए, एमकॉम करोगे, एमकॉम के बाद आपको कहाँ जाना है, कौन से लेवल में जाना है, कहाँ पहुँचना है। तो आपके पास भी वो सब होगा कि आपका कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई इंडस्ट्री में होगा, तो आप प्रोजेक्ट करने इंडस्ट्री में जब जाओगे तो प्रोजेक्ट करने के लिए जब इंडस्ट्री में जाते हो तो खुद प्रोजेक्ट करो, उसका जो भी प्रोजेक्ट है, एनालिसिस है, सैंपल है, उसका इंफॉर्मेशन जितना आपको हो सके उतना वहां से हो, तो वो नॉलेज आपको आगे इंडस्ट्री में और आपके जॉब में भी काम आए। तो बाकी का जो है वो आपको अभी देखो ये क्वालिटी कंट्रोल है, तो क्वालिटी कंट्रोल का हमारा जो प्रोसेस होता है मीन्स वैलिडेशन, कैलिब्रेशन और द इंस्ट्रूमेंट। तो आपका जब इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हो तो उसका कैलिब्रेशन वैलिडेशन स्टेटमेंट है कि नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ जॉब मीन्स जॉब प्रोफाइल। तो आप इसमें भी कैलिब्रेशन वैलिडेशन में भी आप आगे जॉब कर सकते हो। उसके बाद वो है एजुकेशन ट्रेनिंग, तो आपका सब ट्रेनिंग होना चाहिए कि जो फील्ड में काम
कर रहे हो तो आपका ट्रेनिंग उसमें कितना कर पाते हो, तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग कंपनी भी ट्रेनिंग करती है, एक्सटर्नल भी ट्रेनिंग होता है, तो आपको उसके लिए भी करना है। उसके बाद है स्टॉक मैनेजमेंट, प्रोडक्ट टेस्टिंग में आपको जो मैंने अभी बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस रहता है, फिजिकल एनालिसिस रहता है, केमिकल इम्प्यूरिटीज एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। तो केमिकल फिजिकल में भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस रहता है, लाइक सॉल्वेंट, एसिड, पेस्टिसाइड्स, हैवी मिनरल्स। तो ये सब का आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है तो कैसे बन रहा है, उसमें क्या क्या टेस्ट हो रहा है, स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये सब आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, गाइडलाइन, यूएसपी से, आईपी, ईपी से, सबसे आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको ये पैरासीटामोल है तो उसके कितने टेस्ट होते हैं, तो आईपी में भी है, बीपी में भी है, यूएसपी में भी है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वो देखना है कि कितने टेस्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद है टेस्टिंग, प्रोसेस और टेस्टिंग। तो आपका जो प्रोसेस आप कर रहे हो वो बराबर है कि नहीं, वो वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका टेस्टिंग बराबर है कि नहीं, वो वेरीफाई करना है। क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके अंदर सर्विस, प्रोडक्शन, टीम, सक्सेस, स्ट्रेटेजी, प्रोसेस, एनालिसिस इन कस्टमर, ये सब चीज इसके अंदर कवर होगी। तो ऐसा नहीं कि मेरा एनालिसिस किया, मेरा काम हो गया, खत्म बात होगी। क्योंकि इसके लिए भी हमको सर्विस को क्या देखना पड़ता है, प्रोडक्शन का देखना पड़ता है, हमारी टीम का देखना पड़ता है, सक्सेस, स्ट्रेटेजी, प्रोसेस, एनालिसिस और कस्टमर। ध्यान रखते हैं हमको जितना कस्टमर का है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमने प्रोडक्ट मार्केट में उसको दिया है कि नहीं दिया, एज पर रिक्वायरमेंट उसका स्पेसिफिकेशन है तो वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सब जो एरियाज जो है वो भी पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल का है। 5 point of quality control inspection is that project prior to starting a supervisor of efficiency examine material and recipients not meeting quality standard। जो आपका अगर मीट नहीं हो रहा है तो उसको आपको रिजेक्ट करना है। कंफर्म सेफ्टी प्रोसीजर आर बीइंग फॉलोड, assess what once preliminary process is started and when issue conclusion when final project meets our quality standard. So these are the 5 points we need to look after during your analysis, your job role, your whatever activity, this 5 point जो है आपको वो देखना है। क्वालिटी कंट्रोल का जो पैरामीटर है उसमें प्रोसेस, प्रोजेक्ट और रिसोर्सेज, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज नहीं होगी तो मेरा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कंप्लाई नहीं करेगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, प्लान करना है, पहले चेक करना है, चेक करना है। तो ये जो प्लान वो चेक है जो प्रोसीजर मुझे करनी पड़ती है कि मेरा जो आज कुछ करना है एनालिसिस, तो उसके लिए रिसोर्सेज है, सब एनालिसिस के इक्विपमेंट से, केमिकल से, सॉल्वेंट से, इन टाइम एनालिसिस होगा, मेरे पास स्टैंडर्ड्स है नहीं है, तो ये सब आपको पहले से प्लान करना है बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस। क्वालिटी कंट्रोल is the quality management, quality assurance and quality control. The quality assurance and quality control is what is cross-functional, but both are working very simultaneously. They are depending on each other, right? If quality control is not release the product, QA is not approve the product in the market. So you need to learn about the QA and QC approach, how to work QA and QC. Establish the control process. Establish the standard of performance goals or target against good performance is to be zero. Means आपका जो गोल होना चाहिए, आपका कौन से स्टैंडर्ड की अगर एनालिसिस कर रहे हो, कौन से स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, उसमें रिक्वायरमेंट है। मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आता है उसको एक बार वेरीफाई करो, उसको चेक करो कि बराबर एनालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट चूजन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, आपका जो स्टैंडर्ड आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट या कुछ भी आप रिपोर्ट कर रहे बराबर है कि नहीं, वो आपको कंफर्म करना। Evaluate the result and initiate corrective action if the standard is not being achieved. तो आपका अगर कोई
स्टैंडर्ड के अगेंस्ट कंपेयर नहीं होता है तो आपको उसका रिवोल्यूशन करना है कि क्यों अचीव नहीं हुआ। टेस्टिंग फाइंड डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, अगर डिफेक्ट प्रोडक्ट में टेस्टिंग में डिफेक्ट प्रोडक्ट में टेस्टिंग डिफेक्ट है तो आपको रिव्यू द क्वालिटी एस्टिमेट विद मीट्स कस्टमर ओपिनियन, आपको रिव्यू करना है कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है और वो कंपेयर नहीं कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, and define and improve the quality related process and procedure to ensure the quality। तो आपको अगर नहीं कर रहा है तो प्रोसेस प्रोसीजर वो सब डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपका जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपेयर करे। मेथड्स फॉर मैनेजिंग क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, ये जो है सैंपलिंग का इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द सैंपलिंग प्रोसीजर। कि आपका अगर सैंपलिंग प्रोसीजर बराबर नहीं होगा तो आपका एनालिसिस बराबर नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सैंपलिंग प्रोसेस क्या है, मुझे कैसे करना है, एक्टिव के लिए, इनएक्टिव के लिए या दूसरा कोई लिक्विड या कोई सॉल्वेंट बेस्ड मटेरियल रहता है तो मुझे कैसे सैंपलिंग करना है। तो वो सैंपलिंग इज द की रोल इन योर एनालिसिस, एंटायर एनालिसिस प्रोसेस। क्वालिटी को फ्लोचार्ट, क्वालिटी को फ्लोचार्ट डायग्राम, आपको इसका फ्लोचार्ट पूरा डायग्राम पता होना चाहिए। अप्रोच एंड रिक्वेस्ट रिव्यू मतलब क्या है, उसका इंस्ट्रक्शन क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल रनिंग पीपल मेथड नॉर्मेटिव आईएसओ सिस्टम प्रोसेस कंट्रोल प्रोडक्ट प्रोटेक्शन न्यूट्रिशन इक्विपमेंट डे टू डे मैनेजमेंट। सो ये सब क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज है कि हमको डे टू डे ये सब चेक करना पड़ता है। Stringent and systematic quality control system conduct routine inspection and sample testing of raw material, semi-finished product and products। तो हमारा जो डे टू डे का है स्टार्टिंग से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक डे टू डे एनालिसिस करना पड़ता है। सेटअप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट विल क्वालिफाई द स्टेट टू क्लियर और रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सैंपलिंग चेक। So this is the part of the regulatory requirement। Examine and inspect equipment regularly, जो आपका equipment वो है उसको examine regularly करो, calibration regularly, validation regularly करो। Sales department conduct survey और customer feedback and product, आपका product जो भी तैयार कर रहा है उसका feedback आपको check करना है। Quality assurance is project exclusion purpose is of process improvement। Quality control is monitoring and control of project। Purpose is to check and test the quality requirement alignment। So this is the difference between quality assurance and quality control। Methods for managing quality control, statistical sampling, quality tools, inspection, approach and request, Lecture diagram, product statement code, defect diagram, and check sheet on control। So this is the check sheet for the quality control department for the after analysis part। This is the quality control equipment facility like GC, ICTMS, HPLC, UV। So this is the one type of instrumentation of the laboratory। And one is the what is stability channel। The stability part is important for the quality control department। कि आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, तो आप वो स्टेबिलिटी स्टडी करने के बाद पता कर सकोगे तो 2 इयर्स का सेल्फ लाइफ है या 4 इयर्स का। One of the major department of the quality control which is microbiology। So this is the equipment of the microbiology, biosafety cabinet, regular control, incubators। So this is the part of the quality control department। Quality control testing capabilities like physical testing, chemical testing, impurity testing, microbiome testing, animal testing, hormone pesticide, method testing, serology testing, technical testing and calibration। So this is the part of all the testing that type of the quality control department। Major equipment of the quality control department like HPLC, UHPLC, and series analysis in using raw material in process, weighing balance, metal furnace, gas press DC, which is used for the solar analysis, transmission oscillator, water activity meter। These are the used for the LOD and machinery analysis,
Laminar autoclave, BOD incubator, Zephyr, these are for the microbiology analysis. Water stability chamber, as I told you, this is the analysis for the stability study. ICPMS for the meta-analysis and HPTHC for the identification of the starting material. This is the one example for the how to authentic the starting with vertical raw material. So this is the authentic raw material from US and Jodhpur. This is the specimen voucher and we need to preserve this specimen as a reference number. This is the documentation for the raw material like microscopy and microscopy analysis of the starting raw material. This is the microscope and this is the DLC printing for the starting raw material. So you need to have the step of the documentation quality control department. Thank you, sir, for guiding us. Now it's time to turn the next personality who has given us time from their busy schedule to be the guest of today's event. So we have Dr. Aboli Himwe ma'am. Apart from her here, ma'am has completed her PhD in pharmaceutical analysis and completed her management studies from IIM Calcutta. She has also worked with Pune Active Health Technologies Pune as a research executive and analytical research and development, as a manager in analytical R&D and quality assurance at Parmanza Private Limited, as senior manager in analytical development and innovations at Parmanza Herbal Private Limited. She has 50 plus publications in various journals and currently working as head of research and development and innovation with BD for analytical, clinical, preclinical and botanical sciences, Parmanza Herbal Private Limited. I invite ma'am to lead us ahead. Good afternoon, everyone. कैसे गए अल्लाह? Thank you for accommodating us some formal speeches. Thanks to Matoshri Education Society for inviting us and having the practical approach to guide students. So basic requirement of education is how to have an output. So having that vision invested in your Matoshri Pharmacy College by Dr. Rasika and your board of directors, it's very, very visionary. Coming from a place like Ahmednagar and Shrirampur, I also envision my journey, what I shared last time. So this is something you should take very seriously and it is very beneficial for you. And definitely I will acknowledge Dr. Rasika for her smart move to combine technical sections with campus drive so that you will get the all information of quality in technical session plus R&D how to do the research and expressing that same knowledge into campus drive. So that strategy might be beneficial, I guess, in the afternoon session for all of you. So you are getting refreshments, points, and entire session by Hardik also, who has spent 22 years in quality and he has worked hard and very efficiently in botanical nutraceuticals. So I hope that was good to me and for you also, all of including staff sitting here. So I have been enlisted or interested with the technical session again for all of you. So my topic will be League of Innovation in Botanical Nutraceutical. So what is nutraceutical? Next slide please. Some of the disclaimers, being R&D here, don't copy it, don't take photos of it. But you have been a very good audience, I have observed last time. So this is just formality. Next please. So what is nutraceutical? So we often get jumbled on words which I expressed you last time also. So this is very, very technical definition and nutraceutical is a pharmaceutical grade standardized nutrient. So when I am starting this lecture as a botanical nutraceutical, please make an effort to understand the nutraceutical
nutraceuticals are differs. So vitamins, amino acids are also nutraceuticals, and botanical nutraceuticals are what we learn in pharmacopoeial phytochemistry. So when we emphasize on botanical nutraceuticals, definitely it is coming from medicinal plants and pharmacopoeial studies. So next please. Next please. So what is the concept of nutraceutical in healthcare? Say, and suppose it's visible to the last student, whatever slide is there, but let me read you very quick. Nutraceutical is preventive medical approach. Still many regulations, we haven't have this approach for therapeutic purpose, like for curing diseases, which has been not granted yet by many regulatory bodies. So as the nutraceutical industry, we can only claim a preventive medical approach. So this is a chart where we still see lot of classes of nutraceutical divided into based on the chemical composition. So largest are carbohydrates, then you have other vitamins or omegas, and then phytochemicals comes. Phytochemicals are very niche and very premium market. Next please. So these are some of the statistics, and we can see there is a huge going to be again. These are numbers which I was talking in my last session, that these are the numbers how nutraceutical is growing. When we talk about nutraceutical, we again think that this is a herbal plant extraction, something like that. But nutraceutical is very standardized nutrient, and they have the backup research. So today's session, I would like to enlighten or discuss some of the research, how we are doing research as Pharmanza, and how we are doing research in general nutraceutical industry. And when I combine the innovation in that term, innovation, what is innovation? Innovation is something when the research finishes and you innovate the things. That is finding new purpose in the thing, right? Finding anything which has been left or which can create a new claims, which can create a new product. So this is a very simple definition, but please, as usual, Google it. You will get the real definition of innovation. Let's go. Next, please. So when we talk about the Indian nutraceutical market, so we can see customers are out there. You know, I'm having migraine. Now we can term it. I'm having a migraine. I'm having a kind of PCOS. I'm having kind of stomach problem. So now as a medical student or healthcare student, we can term the whatever the disease disorder or health problems we are facing. So now, like these customers are aware. So with this, we are having these contents which may have helped throughout the years to growth of nutraceutical industry, which are high incidence of diabetes, hypertension, along with low awareness of medical insurance. We are not taking medical insurance, then we have to go for medicines or nutritional support, which may increase our chances for better health. So this is some of the ratios where we can see the nutraceutical market is going to be around 10 here in India. So these were statistical before little bit of COVID. So now it has jumped more than 10 billion. Now the industry is reaching around 20 billion. Next please. So when we talk about the dietary supplement, again the dietary supplement is a category which we are seeing as a supplement. So these are the numbers again which is having the categories of vitamins, herbal supplement, protein supplement and chawala. Don't get confused between the terminologies. So these are terminologies according to the regulatory compliance. End of the day, your product has to match whatever the regulatory compliance is. So your botanical product or your any extract based formulation may term as a health supplement, food supplement, nutraceutical or dietary supplement. So these are according to which compliance we are doing. Like my colleague Hardeep was saying, like standards. So which standards you are looking for? ASP, IP. So according to your procedure will be drawn. Similarly,
Similarly, your product will be categorized according to which category you want to do. If you want the FSSAI approval, FSSAI, food safety, FSSAI. Okay, one more question for you. So FSSAI, according to FSSAI, you have to go for the nutraceutical category. Okay, and according to our DGCA or our drug regulatory, we have to go for the phytopharmaceutical category. Next, please. This is 2019, before COVID. So what promising the students think research is? Photos, right? Certificates, LinkedIn, actually research of after COVID and during COVID and even like to change it permanently. Next, please. And the current condition is there is literature or referencing done from ancient literature without understanding the procedure. Why traditional or Ayurveda saying this botanicals use? The second is for medicine, traditional. Or the third is simply guide and said, senior had said. Okay? These are the three things currently a pharmacy research students are doing. Next, please. And what we end up in? We end up in the research which was already done 30 years back. Right? So I will guide some of the practical tips how we can do a research. Those students who have interest in building their career in research, R&D, innovation, any science-based techno-commercial role. Next, please. No single R&D. From the land of traditional Indian medicines, the land of largest API sector, the land of most generic chemistry, no single R&D. Still. So this is the current case. So can we as a pharmacy student that just have this thought. Next. For botanical research. Why we should do the botanical research? Traditionally, use is scientific. So if you have a longer history of uses, it goes into safer category. Right? If you are doing the research on cucumber, will you face the challenge of its safety, safe or toxic? No, I daily use cucumber. But cucumber-based product might help in different categories. Similarly, curcuma, ginger, right? So these are some of the problems. It's not often less expensive, but some of the raw materials are less expensive than the pharma sectors. When we talk, the knowing of population, people know these terms. People know Tulsi, right? If Tulsi face wash is there, how many guys are going to get it? If neem based toothpaste is there, how many people are going to get it? So these are the knowledge, these are the dynamics as a customer. Think you yourself as a customer, you will approach the products very fastly when you know the terms. Next slide please. Challenges. Again we are coming to the FDA regulation after same 5, 10, 15, 20 years. Lack of FDA regulation, still the work has not been done. Dosage standardization. I'm not talking about the standardization and herbal. Dosage standardization. How much dose it should be? There are multiple products which are going into 5%, 1%, 10%. Then again the products is going into 200 mg, 250 mg, 500 mg. So this is little bit advanced for you guys, but please absorb it and try to think. There are multiple products from one medicinal plant, then there are multiple dosage. So there is no control on claim and dosage. Then questionable safety. Again, whether it's a safe, toxic, when it's in extract form. IPR issues. We cannot patent it. We cannot patent it many times. So that's why botanical innovation face IPR issues. Next, please. Some of the basic things I would like you to guide. How we develop a product. What is the cycle of product development? So when we talk about the developing a nutraceutical product, idea generation,
that can this work, what I'm thinking, a tomato or a cucumber or ashwagandha or guruji, we know these terms. Can this work? There is the idea, then screening of the idea, then research, design, testing and launch. These are the cycle, the how research department works. I hope it will help you today also further also. Try to understand R&D is not something you can go and shape the pipette and do it. That happens in films. Okay, R&D have a proper structure and very much thinking, thoughts and idea selection based. We have procedures, how we screen leads, how we screen thoughts and how we screen idea. It's not like that ma'am can ह्याच्यावर काम करू का एक छान दिसतंय लालसर. No, we don't do that. Okay, माझ्या घराच्या मागच हा वेल आहे, हे करू का? No, we still don't do that. Okay, so we have to screen the idea proper for your better productivity and your better success in your research product. Next, please. Segments to watch. There are some of the chemical classes. If there is a final informed students are there, definitely some of the classes will watch. Flavonoids, tannins. These are the very, very powerful chemical classes which are coming into bone health, then antioxidant category, gut health. So these class of compounds is present in botanicals, definitely look for that. Then next is your anti-cancer activity. People are looking more and more, remotely or with the very great kind of expectation that botanical will come up with good health nutritional supplement for cancer patients or anti-cancer. Not anti-cancer activities. Still, it hasn't proven. But a betterment of a cancer patient. That is the one of the category. Then again, osteoarthritis, diabetes invalid. Bone health and brain health is one of the category which we should watch. Honestly speaking, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे ये टॉपिक का शायद बहुत कम लोगों को काम आएगा. But yes, first of all हमें हमारे ओर से हमें खुद से ऑनेस्ट रहना चाहिए कि ये चीज से मुझे डर लगता है, तभी हम उस चीज पे काम कर पाएंगे. राइट? अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मुझे डर नहीं लगता है तो yes, we cannot work on this. Okay? So there are some focus area which we need to focus when you want to get the job, because your study is the most important thing, but second thing we have to grab the practical knowledge also. That our colleague Adi Patel and Aboli Girme has already said that what things to be focused when you are studying. Yes, your study is also important part, but something which need to be different, right? Why I am student got packaging crore and then we are selected, we get limited package. Anyone think on this? किसी ने इसके बारे में सोचा है कि हमें इतना कम पैकेज क्यों मिलता है और इवन हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, और आईआईएम वाले स्टूडेंट्स को क्यों कंपनियां लेने के लिए रेडी होती है इन विदाउट इंटरव्यू ऑल्सो? किसी ने सोचा है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल्स. आपका गोल डिफाइन करो, छोटा बड़ा जो भी आपको अच्छा लगता है आपको गोल्स डिफाइन करो, उसके ऊपर काम करने का स्टार्ट करो. यस, आप स्टडी कर रहे हो ठीक है, पर आपके गोल्स भी होने चाहिए ना. मैं एमकॉम कर रहा हूँ क्वालिटी एश्योरेंस में, बट मुझे इंटरेस्ट है बॉटनिकल रिसर्च में. सो दिस इज अलाइन विद आवर गोल्स? नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योर गोल्स. सेकेंड थिंग, चूज द राइट कोर्स. मैंने एग्रीकल्चर फील्ड सिलेक्ट की है, बट मुझे ट्रैवलिंग अच्छा नहीं लगता है. मैं सक्सेस हो पाऊंगा? यस और नो? ओके, सो फर्स्ट यू राइट
कोर्स चूज करना है, आपको कौन सी फील्ड में जाना है, आपको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है। आपको रिसर्च अच्छा लगता है तो वो फील्ड में जाइए, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है उसमें जाइए। बट मेरे फ्रेंड ने ये कोर्स चूज किया है इसलिए मैंने ये ले लिया, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, यू अटेंड क्लास रेगुलरली। मैंने हमारा जब कॉन्फ्रेंस में बैठे थे तो मैडम बता रहे थे कि स्टूडेंट्स रेगुलरली आते नहीं है, प्लीज डोंट डू दैट। अगर हमें पढ़ाई करनी है तो क्यों अच्छे से करें, राइट। फिर बाद में वो सब चीजें होती जाएगी। बट प्लीज अटेंड रेगुलरली क्लास, बिकॉज क्या होता है कि डे बाय डे जो भी पढ़ाया जाता है वो पार्ट ऑफ द कोर्स होता है। अगर आप कुछ मिस कर जाओ तो वो टॉपिक कहीं ना कहीं पे हमें इन फ्यूचर काम आने वाला है। तो प्लीज मैक्सिमम ट्राई करो कि आप आपके जो भी क्लासेस है वो रेगुलरली अटेंड करो, तो आपको भी पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट पे मुझे नहीं आता है, कौन से सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, किसमें मुझे काम करना है, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, टेक डिटेल्स नोट। अभी ये डिस्कस हुआ है 2-3 पॉइंट्स, तो ठीक है इतना हो गया, बट उसमें भी डिटेलिंग में आप जा सकते हो। बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है अभी। इसमें से कितने लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं? काफी लोग करते हैं। तो सब्जेक्ट पे डिटेलिंग, ये सब्जेक्ट पे हमें क्या सीखने को मिलेगा, किसी ने किया है इंटरनेट में क्या यूज। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेज अभी अवेलेबल है, ऑनलाइन बुक्स आप पढ़ सकते हो। तो टॉपिक्स पे आप डिटेल नोट्स बनाओ जो आपको इन फ्यूचर आपके एग्जाम में भी काम आएगा, आपकी फील्ड में भी काम आएगा, राइट। जो भी स्टडी करते हो इफेक्टिवली करो प्लीज। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ो, बट जो भी स्टडी करते हैं एटलीस्ट हम इफेक्टिवली पढ़े तो शायद हम आईआईएम लेवल पे तो नहीं पहुंच पाए बट थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। तो जो भी स्टडी करते हो, अगर आपने राइट कोर्स चूज किया है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आप डेफिनेटली उसमें इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो। ओके, participate in extracurricular activities. Yes, this is also one of the most important part. Study तो हम करते ही है, I hope, but एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। लाइक कभी आपने इंटरेक्शन नहीं किया है तो आपको इंटरेक्शन करने को मिलेगा, डिफरेंट पीपल, टीम वर्क करने को मिलेगा, जो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री में बहुत आगे जाके आपको काम आएगा। आप किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग करोगे कि नहीं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपके इंटरेस्ट की जो एरियाज है आप वो उसको जान पाओगे, आप कितने उसमें सक्सेस होते हो, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इंडस्ट्री में जाते हो आपके थियोरेटिकल नॉलेज ठीक है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपका होना चाहिए। इंटरएक्शन विद अदर टीम्स, आपको अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाने हैं, आप डिपेंडेंट हो दूसरे डिपार्टमेंट्स, आप कैसे कंप्लीट करवाओगे? तो ये सारी चीजें इसमें आपको हेल्प करेगी। ओके, डेवलप सॉफ्ट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, ये सारी चीजें भी जॉब में बहुत ही रिक्वायर्ड है। आजकल आप देखोगे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो आपको आपके स्टडी के साथ साथ ये सारी चीजें भी इतनी ही वैल्यू रखती है। तो सॉफ्ट स्किल डेवलप करो, कम्युनिकेशन के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम करो। यहाँ पे कितने लोग हैं जो लिंक्डइन पे रजिस्टर्ड है? किसी ने भी एजुकेशन पार्ट पे गए हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज किसी ने स्टार्ट किया है लिंक्डइन पे? ओके, एक ही है। आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज लिंक्डइन पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, पता है किसको, कितनों को पता है? ओके, तो नहीं पता है तो प्लीज आप सर्च कीजिए कौन से आपके इंटरेस्ट के सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, कम्युनिकेशन पे कीजिए। एक्स्ट्रा जो भी कोर्सेज करोगे वो आपके सीवी पे इम्पैक्ट करेगा और डेफिनेटली चांसेस आपके बढ़ जाएंगे इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए, राइट। आपको भी आपके एजुकेशन
सर्टिफिकेशन से भी बेटर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें। वो सर्टिफिकेशन आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देके जाएंगे, ठीक है। इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स किसी ने किए हैं? रियल सेंस में प्रोजेक्ट किए हैं या कॉपी पेस्ट किया है ना? ओके, जिन्होंने किया है उनका आप एक्सपीरियंस दे सकते हो, आप भी कर सकते हो इंटर्नशिप। उसमें आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कौन से डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट का क्या रोल है। जैसे कृषि का बताया, R&D का बताया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट कंपनी में रहते हैं। कौन सा डेटा आपको बनाना, इंटर्नशिप में इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। कंपनी में आपको कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, कैसे कम्युनिकेशन रखना है, कौन से प्रोजेक्ट बनाते हैं, कौन से रिपोर्ट जनरेट होते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी आगे करियर में, राइट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी तो ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कीजिए, या फिर आप खुद से भी अप्रोच कर सकते हो इंडस्ट्रीज में। तो ये सारी चीजें आपको एजुकेशन के साथ साथ बहुत जरूरी चीज है इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए, राइट। बिल्ड एन ऑनलाइन प्रेजेंस, आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उनका ऑनलाइन देखिए कि ये सब्जेक्ट में डिटेलिंग चाहिए कि क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटी है। जैसे R&D में आपने देखे कितने वर्टिकल्स अवेलेबल है, उनके डेली बेसिस पे बहुत सारे अपडेशन आते हैं, स्टैंडर्ड के बहुत सारे अपडेशन आते हैं। तो आपको वो अपना प्रेजेंस ऑनलाइन रखना पड़ेगा, तब जाके आप खुद को अपडेटेड कर सकते हो, राइट। नेटवर्किंग, आपको खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। कोई घर पे आके आपको जॉब नहीं देगा, आपको खुद का नेटवर्किंग बढ़ाना पड़ेगा। लिंक्डइन में कॉन्टेक्ट बनाओ, सेमिनार्स अटेंड करो, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं वो आप करो, उससे आपको सीनियर से कनेक्शन होंगे, वो कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प हो जॉब लेने के लिए। ओके, बहुत सारे सेमिनार्स भी होते हैं, वो रजिस्टर कीजिए, वहाँ अटेंड कीजिए। ये एजुकेशन के साथ साथ पॉसिबल है, लोग करते हैं, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो ये पॉसिबल है, बहुत सारे सेमिनार्स है, वहाँ पे आपको क्या सिनेरियो चल रहे हैं ओवरऑल द वर्ल्ड, ये सारी चीजें आपको नॉलेज में रहेगी, आपके नेटवर्किंग रहेंगे, वहाँ पे कौन सी कंपनीज है, कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है, वो सब कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। रिज्यूम रीडिंग, रिज्यूम में आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम आपके जो भी चीजें हैं, जो आपने ट्रेनिंग्स ली है, सेमिनार्स लिए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओ। तो रिज्यूम मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच कवर इन द रिज्यूम, आपकी हॉबीज क्या है, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, तो बहुत सारी चीजें रहती है, वो डिटेलिंग में कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरा एड्रेस, एजुकेशन, दो तीन चीजें, पर्सनल चीजें रख दी तो हो गया। वो बहुत ही प्रिसाइज, स्पेसिफिक होना चाहिए, और जो चीज एक्चुअल में आपने की है वो कंटेंट कवर होनी चाहिए रिज्यूम में। ओके, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, ऑल
वही हार्दिक सर ने भी आपको बताया, अभय जी ने बताया, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस इंटरव्यू है अटेंड कर लेते हैं। हर एक इंटरव्यू आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देके जाएंगे। आपका सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो प्लीज एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे कहाँ पे इसमें वर्कआउट करना, मेरी वीकनेसेस क्या है, राइट। हर एक के पास कुछ ना कुछ वीकनेसेस होते हैं, तो हाईलाइट करके प्लीज उसको वर्कआउट कीजिए। और प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, हाउ टू अपीयर इन द इंटरव्यू, व्हाट विच ड्रेसेस शुड बी वेयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, कुछ भी पहन के हम इंटरव्यू में अपीयर नहीं कर सकते। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप गो थ्रू कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी हम ऑनलाइन देख सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरा एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं, बट अभी भी थोड़ा बहुत प्रिफर करना पड़ेगा। टेक्निकली, पर्सनली बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ऑनलाइन कोर्सेज में सर्टिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको सर्टिफिकेशन फ्री में प्रोवाइड करती है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट पे भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, सॉफ्ट स्किल्स पे भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो भी इंटरेस्ट है उसमें आप सिलेक्ट करके सर्टिफिकेशन कीजिए, तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, स्टे अपडेटेड। क्या क्या अपडेशन आता है स्टैंडर्ड्स में आपके फील्ड में, कौन सी कंपनी क्या एनालिसिस कर रही है, क्या प्रोडक्ट्स बना रही है, ये चीजें आप जितने भी अपडेटेड रहोगे वो इंटरव्यू में आपको कहीं ना कहीं पे काम आएगा, और खुद के लिए भी, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो प्लीज स्टे अपडेटेड। हम इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट बंद करके ये चीजों पर भी काम कर सकते हैं। उसमें मुझे पता नहीं आपको नॉलेज गेन होता है या नहीं होता है, बट इसमें डेफिनेटली होता है। ओके, अप्लाई वाइडली। बहुत सारी वेबसाइट्स है और बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वहाँ पे आप अप्लाई करो नौकरी के लिए। naukri.com में बहुत सारी ऐसे डिफरेंट लिंकिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज अप्लाई कीजिए। जॉब लेना नहीं है वो बात की बात है, बट अप्लाई तो कीजिए। एटलीस्ट आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, इंटरव्यू अपीयर करो, उसमें भी आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लीज 2-3 बार रिजेक्शन होने से हमारी लाइफ अटक नहीं जाएगी, उसमें से हमें लर्न करना है और आगे बढ़ना है। ओके, इंटरव्यू एटिकेट्स। इंटरव्यू में हमें कैसे बात करना है, कैसे आंसर करना है, केयरफुली लिसन करना है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, हम कुछ अलग तो नहीं बता रहे। कभी कभी और होता है, हम आंसर कुछ और इंप्रेशन जाती है, तो वो चीजें हमें ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें हमें बतानी है। कुछ कभी कभी हमें रियलाइज होता है कि यार ये इंटरव्यू में मैंने बताया होता, तो अभी मेरे को याद आ रहा है उसने बोल। तो प्लीज ऐसा है तो आप प्रिपरेशन कीजिए बिफोर इंटरव्यू कि मुझे क्या क्या चीजें कैसे बतानी है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन कॉमन रहते हैं। अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो तो वो आपको प्रिपेयर करना, फिर उस टाइम में ऐसा ना हो कि यार 2 चीज तो रह गई, अगर मैंने बता दिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। ओके, सिर्फ फीडबैक। ऑनेस्टली आप जब भी इंटरव्यू अपीयर करते हो, आपको रिजेक्शन मिलता है जैसे, तो उस टाइम पे आप अपना उनको फेयरली फीडबैक ले लीजिए कि व्हाई आई एम रिजेक्टेड। वो आपको ऑनेस्टली बताएंगे तो आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। आप टेक्निकली वीक हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो उस पर आप काम कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होने का चांसेस आपका बढ़ जाए। ओके, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आप लोगों को इंटरव्यू से पहले आपके एजुकेशन के साथ साथ ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो डेफिनेटली यू विल बी अपीयर एंड सिलेक्शन मैक्सिमम चांसेस है सिलेक्शन के इंटरव्यू। ओके, थैंक यू। बेसिकली मैं 2-3 चीज़ें
आपको बताना चाहूँगा कि we are representing Pharmansa Herbal Private Limited, which is located at Anand, Petla, and we are providing the better selling accommodation also at the nearby area, and we have also canteen facility, so you can avail these facilities. तो यहाँ से अगर वहाँ आपको जॉब के लिए आना है तो आपको अकोमोडेशन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वी हैव अकोमोडेशन फैसिलिटी. ओके, तो आप वो भी ट्रैक कर सकते हो. और इंटरव्यूज के लिए सब लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज फोकस इन दिस एरियाज, सो you have a maximum chances to get selection in the interview. Okay. Thank you. Thank you, sir, for guiding us about do's and don'ts for the interview. The end of the story is very new beginning for many others. On this note, let's conclude a remarkable session of national level seminar. On behalf of the institution, I request Professor Shivar ma'am to present the vote of thanks. Good afternoon, everyone. I am Dipali Shekhar. It's my great honor to express the vote of thanks. First of all, I would like to thank to our honorable management for giving the permission to this conducting to this wonderful session. Then, I would like to thank Dr. Rasika Bhargav ma'am, our dear Principal and Director of Matoshri Education Society and Jagdamba Education Society. Then, I would like to thank to Pharmansa Herbal Private Limited Industry to sponsor such a national level seminar. Then, I would like to thank our chief guest, Dr. Abuli Girmana, Senior Manager in Research and Innovation, for guide us. Then, I would like to thank our today's guest of honor, Mr. Hardik Patel sir, Head of Quality Department, for guide our student regarding quality department. Then, I would like to thank our today's guest of honor, Vinay Thakkar sir, HR Manager, for guiding our student to how to prepare CV and how to crack the interview. Then, I also like to thank our teaching and non-teaching faculty and our student for their support to conduct this program. Thank you so much. So for the further interview process, we will have tea break now. Meanwhile, outside the seminar hall, your seat number and block number is given for the aptitude test. So look at sheets and go into your respective blocks. After that, the supervisor will assist you for the further process of aptitude, and then you can go for the lunch. When you come from the lunch, you will get your aptitude results, and those who will be selected for the interview round, they will be informed and they will have to stay here. If you have any query, please let me know. Thank you.
Are you sure that you want to